Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 16 and the name of our unit is Force and Machines. Today I am going to deliver its fifth lecture about old and modern machines. यानी कि पुराने ज़माने की machines को हम नए ज़माने की machines के साथ compare करेंगे. हम देखेंगे कि किस तरह से पुराने लोगों का काम ज़्यादा आसान होता था या हमने अपने काम को ज़्यादा आसान बना लिया. So let's get started with the recap of the previous lesson. आपने questions को गौर से सुनना है. What is a wedge? A wedge is flat from the one side, broad and flat, and the other side is sharp, and that is how it is used to tear up the wood. What is the screw used for? It is different uses होते हैं. दो चीजों को जोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा लिड के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है. टैप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. सो बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो इलेक्ट्रिकल बल्ब, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. So screws are very important. Now is the time for an activity. So my dear students, here look at this picture. This is a horse cart. ठीक है, और ये आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता था. आजकल सिर्फ ये डेकोरेटिव चीजों के लिए रह गया है. टोंगा जिसको हम कहते हैं, आपको नहीं ये देखने को मिलता. Any vehicle which is led by animals, बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं. विलेजेस में आप जाएं तो वहां फिर भी आपको ये नजर आते हैं, लेकिन एनिमल लेड जो कार्स है वो अब बहुत कम होती हैं. एंड दिस इज अ कार, अ वेरी मॉडर्न कार, अ स्कूटर. सो दीज आर मॉडर्न मशीनरी. सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, डू यू नो हाउ वाज ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? आपको ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पता है? सो ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो टोंगा था, हॉर्स कार्ट्स थी, बुल कार्ट्स थी. तो दीज वर ऑल old machines which were used for transportation. So my dear students, in today's lecture the students will be able to recognize from the pictures of the past that force applied by the humans and animals move vehicles, tonga, bullock cart, cycle, push cart, while today vehicles are moved by machines, bus, motorcycles, car, etc. So let's quickly move forward towards the pre-reading question. What is the difference among old and modern vehicles? यानी कि नए और पुराने vehicles के अंदर क्या फर्क है? They were slow, they were not very fast, and today modern machinery जो है ये बहुत fast है, बहुत comfortable है, और इससे हमारा time जो है वो बहुत ज़्यादा बचता है. For reading you have to open page number 154 in your GK3 book. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Old and modern machines. The continuous struggle of human being has changed the world around us. Human and animals moved vehicles in the past, while today vehicles are moved by machines. People were used to travel for months on camels going from a country to another. The same distance is now covered in hours in an aeroplane. Modern machine consists of many parts which work together. For example, aeroplane, tractor, train, and laptop, computer, etc. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पुराने जमाने में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ऐसी सवारी में बैठना पड़ता था जो कि या तो इंसान उसको खींचते थे या जानवर जो है उसको खींचते थे. आजकल के जमाने में उसको मशीन्स ने रिप्लेस कर लिया है. तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है और ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत फास्ट है, वो बहुत कंफर्टेबल है और आपके टाइम को बहुत ज्यादा बचाती है. So my dear students, old versus new transportation, ये old है and this is modern transportation. So आपके साथ question ये है, see the following pictures and separate the vehicles moved by human, animals, efforts from those that moved by the machine. So my dear students, pause the video and look at this picture. So इसमें आपको साइकिल और बस नजर आ रही है. One is led by humans and other is by machinery. तो इसमें आप देख सकते हैं ये एनिमल लेड है टोंगा और एक जो है मोटर बाइक जो है ये मशीन रिडन है. तो इधर से आपको मुख्तलिफ कंपैरिजन नजर आ रहे हैं. फॉर एवेल्युएशन नेम सम ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से थे? लोग जो है वो पिजन जो है उनसे खतो किताबत करते थे या स्मोक सिग्नल्स होते थे, खत लिखते थे, लेकिन आजकल के जमाने में ईमेल, मोबाइल फोन वगैरह ने इनकी जगह ले रही है. So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it from by your teacher. So write if it is driven by machine or human. Animal, machine, humans, machines.
For homework, you will do home activity number 2 given on page number 155. And the wrap up of the lesson is today we have compared the past transportation and the modern transportation, the technologies which were in the past and how they have changed in the present times. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.